स्टार्ट स्ट्रीम तो हो चुकी है। क्या हो जाएगा कुछ क्रेजी। भाई बहुत प्यारा लग रहा है भाई। अरे भाई आज का क्या दिन गया है भाई। रिकॉर्डिंग हो गई भाई। विक्रम सर ने 8 फाड़ ली। क्या क्या रिकॉर्ड करवाया है उन्होंने। लाइव स्ट्रीमिंग का क्या सेटअप बैठा है भाई। ओहो शिट भाई। एक्चुअल पीक भाई। Why is the voice doubling? That is the only problem which we have as of this moment. Why in the world is the voice doubling? Voice doubling क्यों कर रहा है? अब कर रहा है doubly the chubbly. ओ भाई एक इंसान कौन आ गया भाई? अशर उमर। अरे अफरोज। अरे भाई रात के 1:30 बजे तक लड़के क्यों है? अशर मेरी जान बहुत बहुत। हाँ उमर भाई वॉइस एको कर रही है। ओबीएस सेट करें। करा है अशर भाई। आई होप अभी सही हो गया हो। अफरोज मजा आ गया भाई ये देख के तो। अरे अफरोज भाई अस्सलाम वालेकुम। अशर सलाम। यार मजा तो आ गया अफरोज भाई। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। बहुत मेरे करीब दोस्त जिगरी फ्रॉम द ऑफिस शौर्या भाई के सेटअप और घर पे पहुंचा गया है। द पॉइंट इज एको रुका नहीं है एज फार एज आई हैव विटनेस्ड। ओह शिट एक सेकंड एको रुक गया तो व्हाई द फक इज दिस। मेरे भोसड़ी के आवाज नहीं आ रही एको रुक गया। अबे पॉइंट इसका नहीं है। पॉइंट ये इतना टिपा क्यों आ रही है आवाज। पंखा ऑफ करो ना। क्या बात कर रहे हो यार। ये रुको यार रुको क्या। ओ फक भाई मैंने इसकी सेटिंग्स ऑल द वे रैंप अप कर रखी है। क्या हो रहा है। वालेकुम सलाम। अरे बेटर है थोड़ी वॉइस जो करा है थोड़ा और करो से। ओके ओके अफरोज मेरी जान मैंने ना इसका पूरा एम्प अप कर रखा है यार। अफरोज भाई अभी थोड़ी सी लंड की सवारी करी है। आप और कर लो। भाई 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 अबे मेरा छोटा भाई भी है स्ट्रीम पे भाई। अभी कौन है आपका छोटा भाई? अबे है भाई है। बकचोदियों मत करो भाई। देखो यार अशर ये जो भी अभी स्ट्रीम पे होगा वो सही नहीं होगा तो आप इसको देख के भुला दिएगा ठीक है। बहुत अभी लोवेस्ट पॉइंट पे दिखने वाला हूँ मैं आपको। सही हो गई वॉइस पूरी यार। आई डोंट नो व्हाई बहुत एको कर रही है आवाज फॉर सम रीजन। सही नहीं होगा तो आप इसको देख के भुला दिएगा ठीक है। बहुत शहर चांद बहुत बनाने लग गए हो देख रहा हूँ मैं। हाँ चांद बहुत। अरे फकर एक तो मैं सोच रहा था क्या बेहतरी है कहीं यार ऊपर मुंह पे माउंट कर दिया है। लेकिन क्या यार एकदम प्रोफेशनल स्ट्रीमिंग का जो वो रहता है एंगल रहता है बेसिकली व्यूइंग क्या ही लग रहा है। अशर मेमोरी रिबूट कर लूंगा स्ट्रीम के बाद। यस माय मैन दैट इज व्हाट वी वांट। नहीं कर रही नहीं यार अफरोज। अच्छा तुम लोग को नहीं सुनाई दे रही है क्या? मेरा फोन ही टिप गया है। व्हाट द फक मेरी जान जरा। हाँ यार देना यार मुझे एक और बार देखूं अफरोज मेरी जान। यहाँ पे तो ग्रीन ही दिखा रहा है यार। बहुत ज्यादा मिड कर दिया मैंने इसकी आवाज को। लाइक ओ भाई नाइस यार मेरे एंड पे बिल्कुल सही आ रही है वॉइस। बिल्कुल सही सी है वॉइस। नाइस यार वेरी नाइस। तो स्ट्रीम फिर आप जो देख रहे होंगे लास्ट टाइम यार गाइस अशर अफरोज हम लोगों ने हमारा जो स्टेट ऑफ प्ले था जो प्ले स्टेशन की तरफ से लाइव स्ट्रीम होती है वो अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं कर पाए थे। दिस टाइम अराउंड वी विल नॉट बी मेकिंग द सेम मिस्टेक। आज है समर गेम्स फेस्ट। इट विल बी स्टार्टिंग ऑन 2:30 और 2 घंटे की लाइव स्ट्रीम होने वाली है यार। अभी चाहे देख लो या कभी भी बाद में देख लेना भाइयों लेकिन देखना जरूर। अभी आने वाले गेम्स के मामले में जितनी भी मेन तुम्हारी वो होती है अनाउंसमेंट्स करे जाते हैं वो बता देते हैं जरूर देखना। भाई बिल्कुल सही आ रही है भाई मत देखना। भाई क्या सियाप पाल रहा हूँ मैं ये सियाप पाल रहा हूँ भाई। अरे भाई घर बुला के स्ट्रीम देके गन मारी यार भाई।
गलत भाई। चलो अरे कुछ और चला के तो देखें, इसी पे ही अटके रह जाएंगे। तो अभी at this point of time I have also downloaded the game Resident Evil 7 Biohazard। अपने साथ में एक स्पेशलिस्ट लॉन्डे को लेके बैठा ही हुआ हूँ। ये रेसिडेंट इवल पगलू हो चुके हैं अभी। रेसिडेंट इवल 7 8 कंप्लीट कर लिया इन्होंने। 7 पहले कर लिया था, 8 अभी किया। अरे पगला ही गए हैं बिल्कुल। तो अभी चल रहा है, यही हमें गाइड करने वाले हैं। ब्रो कितना प्यारा लग रहा है यार। शिट यार, दिस गाय हैज वन ऑफ द बेस्ट सेटअप्स यार। काश तुम लोग देख पाते भाई। भाई दिस इज माय एंड गोल राइट नाउ। 2026 का एंड गोल है मेरा यार, ये जो तुमने अभी यहाँ पे शौर्य कर रखा है। लगाते हैं यार, तब तक यूट्यूब चलाते हैं। अभी हम लोग डिनर भी करने वाले थे यार। तो अगर आप लोग भी चाहें अशर से क्लैम डिनर पकड़ो अगर, और कर लो हमारे साथ। नहीं करा है तो अगर कर लिया है तो बस वीडियो क्या बकचोदी है। कुछ भी बकचोदी है भाई, खिला भी नहीं रहे, खा लो अपना बहन चोद। और क्या भाई, खाना है बस। जिसने खा लिया है भाई बढ़िया है, यूट्यूब वीडियो देख ले। नहीं खाया है खाना तो हमें देख लो बहन। नहीं खाया है तो हमें देख लो। मैं ऐसे ही क्या यार, क्या टिपी भी फीड है भाई तुम्हारी। एक फीड में भाई तमीज की वीडियो वो नहीं हो रही है। व्हाट द फक इज दिस शिट भाई। मैं आपको टेप दूंगा यहीं पे। अरे भाई अकाउंट स्विच करने दो तुम बात। Oh, $750 gaming PCs are easy now. Actually, yeah, let's just go for that. Zach TT. In order to build this 700, or Zach Turv is one of the greatest YouTubers or creators in general who make builds और PC का है। तो बहुत करनी वीडियो होती है यार। अगर नहीं देखते उसकी देखा करो। उमर भाई एट डे टाइम, उमर भाई नाइट टाइम। नहीं भाई, अरे मेरा भाई छोटा भाई यार मेरा अशर। अरे नॉर्मल वाले नहीं दिया अशर भाई। नाइट टाइम वाले को भुला देना है ये बस। रात का ही बात हुई अशर। अभी तो मैं बहुत दब गया हूँ आपके मौजूदगी में, तो वो नहीं है। 150. चलो यार बस बहुत हो गया। दाल चावल निकाल लिया था, बहुत हो गया भाई। दाल चावल बैंक चो, दाल चावल बनाया मैंने। हैं? चिकन बनाओ, ये दाल चावल नहीं। ऐसे ही कर देता हूँ भाई। शौर्य भाई ने देखो यार, देखो अब भले ही खाना खाया नहीं खाया भाई। क्या एकदम ग्रेवी वाली चिकन हमारी कोरमा स्टाइल और चावल बनाए गए हैं एकदम बहुत खूबसूरत प्यारी तरीके से। तो अभी हम वही टेपेंगे जाके। सीम्स लाइक मोर डार्क वेब स्ट्रीम मोर देन गेमिंग स्ट्रीम। बिल्कुल सही भाई। लिटरली ऐसा नहीं लग रहा यार कि अभी मैं कोई क्राइम डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात कर दूंगा कि अरे कैसे हुई मेरी हत्या, कैसे मुझे मेरे जिगरी दोस्त ने अपने घर पे रात के 2 बजे बुलाया और मुंह पे मच्छी सीधे दाल भात। अरे नहीं यार, नहीं मजाक कर रहा हूँ यार एकदम। दाल भात बोल रहा है। अबे यहीं पकड़ लूंगा, पता भी नहीं लगेगा किसने पकड़ा। छोटा भाई है। छोटा यार। अरे यार अशर भाई नहीं यार, नहीं बनाई दाल उसने यार। गॉड ऑफ वॉर लॉफे का ट्रेलर देखा? अरे अफरोज मेरी जान, गॉड ऑफ वॉर लॉफे का ट्रेलर ही लगाऊं लाओ। उस पे देखा ही नहीं 10 बार तो ट्रेलर देखा यार अफरोज। उस पे मुझे वीडियो भी बनानी थी, लेकिन बस आपके भाई के साथ जब भी मैं आता हूँ तो थोड़ा टिप जाता हूँ मैं यार। काम अकेले ही में हो पाता है, अफसोस। क्या खूबसूरत ट्रेलर है और भाई क्या गेम आने वाला है भाई। क्रेजी गेम भाई। भाई तो दिस इज अ वेरी ग्रेट। वो मुझे देखना है अभी हमारी स्क्रीन की आवाज कितनी जा रही है यार। तो ये सही अफरोज भाई ने वो कर दिया। गुड सजेशन ओवरऑल अफरोज भाई। गॉड ऑफ वॉर लॉफे का जो ट्रेलर यहाँ अच्छा हाँ होगा अभी। द हैंगिंग ट्री काश इस पे बनाओ। हैंगिंग ट्री गाना इस पे गॉड ऑफ वॉर की रोल में होगा काश। बहुत मजा आता है। अलीगढ़ कब आओगे अफरोज मेरे भाई? अलीगढ़ आई बी कमिंग ऑन द सेकंड वीकेंड। अभी सेकंड वीकेंड या कमिंग वीकेंड? अब तो सैटरडे हो गया। यस
कमिंग वीकेंड में यार फ्राइडे की छुट्टी भी लूंगा इंशाल्लाह अमीन। मैं अगले हफ्ते के थर्सडे में निकल जाऊंगा अफरोज, और थर्सडे की रात में पहुंच जाऊंगा। फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन रहना है यार और मजे कर देना। बस सैटरडे मेरा थोड़ा पूरा कंप्लीट बिजी दिन जाएगा यार। सैटरडे में हमें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 2018 12th बैच की रियूनियन होने वाली है, तो उसमें करना मसला बैठा दिया है। सलमान भाई की तरह बिल्कुल फार्म हाउस बुक कर लिया है लॉन्डो ने, बारबेक्यू से लेके पूल से लेके मचा दिया है लड़कों ने थोड़ा बंदोबस्त। वॉइस एंड ऑडियो परफेक्ट है, नो नीड टू एनहांस एनीमोर। परफेक्ट अशर यार, अरे मेरी जान तुम्हारी मौजूदगी है यार, और क्या चाहिए। Find your way home. You are free. देखो अशर, जैसे तुम बोल रहे थे, दिस इज अभी हमारा स्टेट ऑफ प्ले के अंदर जितने भी गेम्स के चीजें अनाउंसमेंट्स हुए हैं, यू कैन बेसिकली मेक अ वीडियो ऑन ईच एंड एवरी सिंगल अनाउंसमेंट। तुम शॉर्ट भी बना सकते हो कि गॉड ऑफ वॉर लाफे द अपकमिंग फाइनल गॉड ऑफ वॉर गेम, द वेरी फर्स्ट गेम इन व्हिच द प्रोटैगनिस्ट क्रेटोस हैज बीन रिप्लेस्ड विद हिज वाइफ in the history of God of War franchise, in the history of God of War series। और इसमें अब फाइनली हम लोग ये देखने वाले हैं कि God of War की स्टोरी के साथ कंटिन्यूएशन मतलब पूरा बना सकते हो यार तुम। Even though you haven't played the game, you can definitely make a video on this. You can make a video on Tomb Raider, Legacy of Atlantis। Tomb Raider का रीमेक आ रहा है यार। Until Dawn 2 आ रहा है, one of the legendary horror franchises Until Dawn 2। उसके बाद और क्या आ रहा है यार? और क्या कर रहा बोला तो? Wolverine, fucking Wolverine भाई। अबे Wolverine और God of War, अशर इस पे वीडियो बना दो, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। You cannot start much more stronger and much more better with regards to these two games। अरे तुम चीते बस ट्रेलर देखो, God of War के लेटेस्ट गेम का ट्रेलर है, तुम ट्रेलर देखो यार, क्या गेम बना दिया है इसमें। I need light here, I need light. Fuck. If you don't recognize who this actress is, this is Deborah Ann Wall. She's the actress from the Daredevil और तुम्हारा Punisher series। तो Punisher series और Daredevil में जो बंदी होती है ना, जो मैट मर्डॉक की वो बन जाती है, दोस्त बन जाती है, and joins his law firm. So she's that actress by the way। जी भाई बहुत नेक्स्ट लेवल है ये पार्ट गॉड ऑफ वॉर का। तो बस चीजें नेक्स्ट लेवल तो बना दो वीडियो। नेक्स्ट लेवल तो बहुत चीजें यार, मुझे चाहिए अब आपकी नेक्स्ट लेवल वीडियो। अशर भाई देखो मेरी यार तुम। अरे यार लाइट जलानी पड़ेगी भैया, रुक जाओ, मुझे इसको डार्क वेब स्ट्रीम से हटा के मुझे इसको एक्चुअल लाइव स्ट्रीम पे लाने दो। बिकॉज मेरा इतना खूबसूरत बनाया गया दाल भात सूतना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा इसके लिए। तीसरा इंसान कौन है लाइव स्ट्रीम में? तो तीसरा इंसान, प्लीज रिवील योरसेल्फ। मैं तब तक लाइट जला के आता हूँ। कच्ची का रंग दिखाओ। Okay. Really close. The fire. It happened. ऐसे ही It's just जो भी थर्ड इंसान है, अफरोज भाई कह रहे हैं अपनी कच्ची का रंग दिखाओ। क्या बदतमीज इंसान है भाई। गलत भाई, तुम तो ना मुझे बदतमीजी के लिए बोला ही मत करो। this definitely isn't the light of Alfheim. यार इसी के लिए लाइट ऑफ कर दी थी, साला ये फ्लिकर आ गया था। अरे तीसरे चौथे लोग कौन आ रहे हैं भाई? क्या हो रहा है? ओके तीसरा इंसान अगेन रिवील योरसेल्फ। भाई ये बहुत जरूरी है पता करना फैमिली मेंबर है नहीं है। ओ भाई ओ ऐसी माइंडसेट से थोड़ा काम करना कि कोई एक्चुअल फैमिली मेंबर है। Fuck the level quality, the graphics of God of War Ragnarok is 10x ahead. फराज भाई तो नहीं, अरे फराज भाई होते तो इतनी देर में चौको दे देते। फराज भाई होते
shouldn't have been मेरा here. भी YouTube प्रीमियम ठीक है, बकचोदी नहीं। अरे हाँ जबरदस्ती, छुट्टी है। क्या गेम प्ले चल रहा है भैया, इससे मतलब ही नहीं रहा, चला के छोड़ दिया मैंने। Yeah. लेकिन नहीं भाई, the combat's about to go crazy, the lore, the story, वाह बड़ी जल्दी तुम्हारा प्रीमियम स्लो है। मसाले थोड़े कम से मिलाओ, पूरा मिलाओ, पूरे सूप के साथ ढंग से मिला के खाओ, ये मसाले थोड़े कम चाहिए। मसाले ज्यादा लग रहे हैं यार। भाई रुकना जरा, समर गेम फेस्ट में टिप जाए इतने बातों बातों में, मजे मजे में। रुकना जरा भाई, 2:30 बजे ही शुरू हो रहा है ना। दलेर कब शुरू हो रहा है? वाह ब्रो, I have a question. अरे भैया What's a guy? लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का सेकंड ट्रेलर कब आ गया भाई? 4 दिन पहले।是被神遗弃的黑暗之民，是被生活在这充满诅咒的地方。那一刻，你想让全城的人都为你父母殉葬吗？ अरे चाइनीज तो यार, तेरे चिंचाओ要战胜这样的神吗？ 冰淇淋正义小子，我想请你帮我鸡蛋在贝克曼找一个人的下落。大调人先生，这份委托我接下了。 Peak is back guys, Peak is back। 2027 में इसका सेकंड सीजन जरूर आ जाएगा। रोज अशर लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज नहीं देखी है, यू आर मिसिंग आउट। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज देखो भाई, यू आर मिसिंग आउट ऑन वन ऑफ द फाइनेस्ट एनिमेशंस। थोड़ा देखो भाई, यार बदतमीजी करे चले जा रहे हैं। कितनी की है वो? ओ माय गॉड 150K डैम। अरे यार इसका स्टेट ऑफ प्ले की कितनी वो गई थी बाय द वे, लाइव करते तो देखना है शौर्य। आई एम वेरी वेरी क्यूरियस कि स्टेट ऑफ प्ले बड़ा होता है या समर गेम फेस्ट बड़ा होता है। गेम ऑफ द ईयर तो बिगेस्ट इवेंट होता है विद रिगार्ड्स टू गेम अनाउंसमेंट्स, एंड वो गेम ऑफ द ईयर है भैया वो। द फक व्हाई इज दिस नॉट लाइव? रुको यार जरा इसकी सेटिंग कर दूं मैं पहले भाई, ये जरा देख के चलूं भाई, टिमाइन हो जाए। समर मैंड्रिन लाइव स्ट्रीम, मैंड्रिन ओवर 3 मिलियन पीक कंकरेंट लाइव व्यूअर्स। 3 मिलियन पीक कंकरेंट लाइव व्यूअर्स थे स्टेट ऑफ प्ले में। यार एक अलग दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है? एक दूसरा वाला रेडिट वाले पे मेरे को ज्यादा भरोसा है। नहीं नहीं, दूसरा वाला कितना दिखा रहा है? नहीं बताओ। अरे कहाँ टिप गया? समर गेम फेस्ट ऑफिशियल 4K लाइव स्ट्रीम मेरी जान। ठीक है ठीक है, 2:30 बजे शुरू होना है बेसिकली। ठीक No. that is extremely, that is not low, that is just two very different statistics। एक अगर 3 मिलियन बता रहा है, दूसरा 800 के बता रहा है, तो दोनों में से कोई एक चूक गया है। ये तो बात ही अलग हो गई भाई। डेविल में क्राई देखी थी अभी? अरे डेविल में क्राई कैसे नहीं देखी? बस गेम नहीं खेले यार अफरोज भाई। एब्सोल्युटली डेविल में क्राई सीजन 2 भी देखी। फॉर दोज ऑफ द पीपल जिन्होंने यार अनफॉर्चुनेटली गेम खेला है पूरा सीजन 5 डेविल में क्राई 5 तक उनके लिए बहुत टिपा हुआ साबित हुआ वो, जैसा फराज मुझे बता रहा था। बहुत सारी स्टोरीज चेंज कर दी, कैरेक्टर के मोटिवेशंस और वो चेंज कर दिए, बहुत सी चीजें चेंज कर दी। मुझे बहुत मस्त लगा, मुझे मजा आ गया भाई। मुझे इससे मतलब है क्योंकि मैंने ना गेम्स खेले और मुझे मजा आ गया। ये देखूंगा अफरोज भाई, लॉर्ड ऑफ द 3 मिलियन ना, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज मेरी जान देखो। ट्रस्ट मी, यू विल थैंक मी as greatly as you I can। have to find a way back.
समर गेम फेस्ट की लाइव स्ट्रीम से कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह का तो सीन नहीं है। एब्सोल्युटली है अशर भाई, क्यों नहीं है? बिल्कुल है यार, कॉपी स्ट्राइक आ जाएगी, तुम्हारी वो डिमोनेटाइज हो जाएगी वीडियो, सब कुछ हो जाएगा, बिकॉज यू आर यूजिंग वीडियो, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट लग जाएगा ना यार। तुम वीडियो है, फुटेजेस हैं, म्यूजिक है जो कॉपीराइटेड है, उसको यूज कर रहे हो। बेसिकली वही चैनल्स कर सकते हैं जिनको परमिशन दी गई होती है, फॉर एग्जांपल IGN, गेम स्पॉट, गेम रैप्स। एक घंटा बाजरा फर्क है यार। दिस इज द पॉइंट व्हेन यू हैवंट मेड इनटू अ बिग स्ट्रीमर, अ बिग यूट्यूबर। 1500 के लाइव स्ट्रीम डिमांड है, कुछ होगा नहीं, हमें सिर्फ कॉपीराइट स्ट्राइक एवरीथिंग गोस, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चलता है। Come from the Eagle Outlaw. Not the gates. The gateway is closed. So just to fill in the context, now this is a domain which is called Everwin. तो ये एवरविन है इस जगह का नाम, और इस जगह में सिर्फ मरे हुए गॉड्स ऑफ वॉर हैं। So this is generally a domain, it's a realm in which only the god of war from all the mythologies are present. जितने भी religions हैं, जितने भी mythologies हैं, उन सबके god of war present हैं यहाँ पे। तो this is going to be crazy भाई, क्योंकि अब तक हमने पूरे टाइम सिर्फ 2 गॉड ऑफ वॉर से मिले थे। ग्रीक गॉड ऑफ वॉर जिस क्रेटोस, उसके पहले एरीज था, नॉर्स गॉड ऑफ वॉर विच इज टियर। अब पूरे फ्रैंचाइज में सिर्फ 2 गॉड ऑफ वॉर मिले, इसके 2 मिनट के अंदर देखना भी इसमें गेम प्ले में दिखाया गया है। आप लोगों के सामने प्रेजेंट है मंगोलियन गॉड ऑफ वॉर, द रेड डीमन किंग राक्षसा। तो अलग ही मिथोलॉजी का, अलग ही रिलीजन का एक गॉड ऑफ वॉर देखने को मिला हमें। दिस इज द मंगोलियन गॉड ऑफ वॉर। खतरनाक टाइटल है भाई, द रेड डीमन किंग, बिल्कुल सुकूना लेवल टाइटल है लौंडे के पास हमारे राक्षसा है। ऐसे ही Sekhmet, the Egyptian war of goddess, Ro. एकदम टिपे में सबटाइटल है, सबटाइटल भी सही नहीं आ रहे, छोड़ो। This is important to you. तुम लोगों की आवाज सही से आ रही है ना? by the way, I wonder, इसकी मैं बढ़ाऊं सिस्टम की आवाज, तुम लोग बता देना यार। do you think this could set you free? Me again, and I swear I will kill you. Would you like to see how hard it is to die here, Godly? I can show you. You can't keep me here. The gateway is closed. There is no escape. I am in The first part I understand you're into this trailer. The second part don't of this brother is kind of lost on me. Again, we continue. Resisting the truth will only make this more painful. पिछले 20 साल की हिस्ट्री में 2 गॉड ऑफ वॉर, इस 2 मिनट के अंदर 2 नए गॉड ऑफ वॉर। Let's see. I will handle that problem.
You deal with our new pet. But personally, I believe इन दोनों का चक्कर जैसा कि हम लोग सॉन्ग बहुत हाई कर दी है आपने, वॉल्यूम डाउन करें, आपकी वॉइस नहीं आ रही. What? None of the scale. रुको यार, मैंने ये ऑन कर दिया था, अब सही हो जाना चाहिए. I think अब they're सही हो gone. जाना चाहिए, चलो मुझे बताना. Just be careful. Fresh air. अगर अभी सही होगी हो तो बताओ, वरना मैं इससे ही कम कर दूंगा आवाज. यहाँ से. Different. You're a cube. मैंने वो FX का वो ऑन कर दिया था. जिससे You know what? सामने It doesn't ना matter. How do we get out of here? Yeah, we've tried. There's no way out. Then you're a talking sword. I'm not the sword. I'm the ribbons, obviously. And my name is Rue. The cube is Frank. The boys के Huey ने. अब boys का नाम क्या था? लौंडे का नाम क्या था? लौंडे का नाम भूल गया मैं. Shit. अरे यार. इंटरप्शन के लिए सॉरी यार. चीतो मुझे मच गए बिल्कुल. Huey, Jack Quaid, the guy who has played Huey in आपका The Boys, यही चीता है. इस चीते ही ने करी है वॉइस एक्टिंग जैक क्वेड ने of this cube, Frank. I'm Faye. There has to be a way out of here. लेट्स करें वॉल्यूम अभी भी 70% बैठी, सामने 30% बैठी. ओके. Of course I'm not here. कम कर दिया, रिलेटिव बहुत कम कर दिया. पता नहीं मुझे. They did to come through रुको the मैं doorway. इसकी भी मैंने बढ़ा दी. It's like you're holding something back. बताओ सर, बताओ यार चीजें सबको सेट आ रही है नहीं आ रही. With regards to again the trailer as well as my sound. मैंने गलती सेटिंग्स में छेड़छाड़ करी है. जो बात जब सही था तो Where are we anyway? Afterlife of the gods. I call it the everyone. Afterlife of the gods. Great. So, what's the plan, boss? Not your boss, Frank. That cask. That's why you're trapped. Yeah. Wait, you made that big explosion happen, right? Could you do that again? My magic's wrong here. बहुत ज्यादा है. I feel wrong here. How the fuck यार, ये क्या हट नहीं पा रही है क्या? शौर्य, इसे बंद कैसे करते थे यार? इसको बिल्कुल शौर्य, चीते इसको बंद कैसे करते थे? टर्न ऑफ. हाँ, टर्न ऑफ हो क्यों नहीं पा रहा है? लेकिन हो गया, वो टर्न ऑफ हो गया. टर्न ऑफ करो फिर. One out, right? I think we all want that. We definitely do. ओह, अरे fuck my life. 2 बार करना होगा. ओके ओके, डन. चीतों अब बिल्कुल सही याद आनी चाहिए. रुकना जरा. You're dead. How do I accept that? Simple. Focus. You're here. Be here. चीतों अब बताओ क्या हाल है? But what if I need to be somewhere else? Then focus on what you do need. अब मुझे लग रही सही हुआ है. Even on the phone right now, I think it's
Good enough. Good enough. Find your way home. That's it? What were you thinking of? A promise. Okay, we'll take it. Now let's get out of here. Okay. Get ready. Wait! Not a good idea! Bad idea! God of War के genuinely यार जो ट्रेलर से लेके ये भाई Kratos is going to show up in this game, bhai. Oh. Rue? I think you should give her the sword. How do I know I can trust her? I'll give it back. I promise. सबका पापा आ गया असली अपना पापा Okay. Absolutely. Take it. Absolutely. God इस वाले God of War हो गए इस sword की भी अलग कहानी है सबसे इम्पोर्टेंट होती है रुकना Just so much faster and so much fluid than Kratos' gameplay. Kratos' gameplay was all about like firm, aggressive, slow. अब ये वो कर नहीं कर रहा है finisher है this shit जो भी हुई है ना जंपिंग मैकेनिक ओजी ट्रिलॉजी में प्रेजेंट था पूरे गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक में आप जंप नहीं कर सकते गेम मैकेनिक ऑफ जंप वाज कंप्लीटली टर्मिनेटेड गॉड ऑफ वॉर लाउड से जंप इज नॉट अब आप तुम जंप कर सकते हो लाइक नॉर्मली दिस इज सो गुड भाई तरस गया था मैं जंप करने के लिए गॉड ऑफ वॉर के गेम में Come on! No! I got a promise to keep. Fine, but lady, that sword is more than you think it is. Already? I will kill you. Don't make promises you can't keep, Gotham!
Hi, I'm Corey Barlow, Head of Creative at Santa Monica Studios. Thank you for watching this extended look at the next core game in the series, God of War, Lao Fei. You know, telling Faye's story has kind of been a goal of mine since we started working on the Norse Saga. She is very near and dear to me as a character, so I at Santa Monica Studios. Thank you for watching this extended look at the next core game in the series, God of War, Lao Fei. You know, telling Faye's story has kind of been a goal of mine since we started working on the Norse Saga. She is very near and dear to me as a character, so I knew that we needed the right person to see this one through. I would like to introduce Lao Fei's game director, Ariel Lawrence, whom I've had the pleasure of working with for more than 20 years. Man, there is nobody that I trust more to bring this story to life than her. Well, thanks, Corey. Hi, I'm Ariel, and I'm honored to represent the entire Santa Monica studio team. We hope this small slice of game we've shown you today has given you a good introduction to what it's like to be Faye and the kind of trouble she finds herself in the afterlife of the gods. The team is still very hard at work creating this new adventure with Faye as she fights through the Everywind to save the ones she loves. You can expect us to be back with even more details as we get closer to release. We're super excited and cannot wait to show you more of the magic and danger that awaits Faye. Until then, thanks again for watching. Bye. बात बताओ यार, सिर्फ मैं ही हूँ या बहुत टिपाई की आवाज आ रही है बैकग्राउंड में? हाँ भाई, बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है बहुत तेज। बैकग्राउंड नॉइज कहाँ से आने लग गई बे? I have absolutely no idea चीते, बैकग्राउंड नॉइज कहाँ से आ रही है? What the fuck? चीता आप बताओ क्या मसला है? बैकग्राउंड नॉइज आ रही है मेरी? अलग ही मसले हो रहे हैं भाई। डीलिंग डार्लिंग, काम शुरू हुआ नहीं है, डीलिंग पहले हो रही है। पता नहीं कोई वीडियो चल रही है। अब सही है अफरोज, मुझे अब तो अपने डिवाइस से तो नहीं आ रही चीज। अब तुम बताना जरा। वुल्वरीन का ट्रेलर भी देख ले जरा तेजी के साथ। यार शौर्या, चीते, मेरी जान, एक तो ठंडी। नहीं 7 मिनट किसमें बचे? अरे नहीं यार, वो तो देख लेंगे। पॉइंट इज ये और चीजें सुनता। अरे पता नहीं बड़ी चल रही थी, हल्की हुई है। हल्की भी क्यों हुई, चली क्यों रही है यार? अब भाई आ रही है बस हल्के। अरे मेरी जान, ये पंखा चल रहा है, मुझे लग रहा है बहुत फुल स्पीड पे। All right, let's search the area. वुल्वरीन का गेम प्ले देख लिया जाए चीतों। Bro, the level of straight up violence, gore and aggression has been taken to a different plane of existence, right? ऐसे ही। अब भाई मेरी जान, बैठो यार। शौर्या भाई, आखिरी आपको कर दी। इसको पेट से ढूंढना फ्रिज में रखिए। मैं इसको इंशाल्लाह सबको दूंगी। मेरा पेट भर गया। क्यों मारा है मेरी जान? बढ़िया, एक और बहुत जिगरी और बहुत अच्छे दोस्त आ रहे हैं। अरे आपकी आवाज आ रही है जो अपने अभी बोला, वो 5 सेकंड बाद दोबारा आई आवाज।
यार कि इस पे अब आवाज मेरी वो क्यों हो रही है, सारी टिपाई क्यों हो गई है इसमें? कोई आसपास आपकी लाइव ऑन करके बैठा है क्या? अफरोज भाई मैं ही अपनी लाइव ऑन करके अपने मुंह पे बैठा हूँ। मुझे स्ट्रीमिंग करनी चाहिए यार। तुमने एब्सोल्युटली फक यस भाई। अरे मुझे लगता है इसकी लॉगिंग करूंगा भाई स्ट्रीम पे। सही है भाई, करो भाई यार ये तो बहुत बढ़िया सा लग रहा है यार। बहुत कर्रा लग रहा है भाई, तो मैं क्या बता रहा हूँ आज की देर से। और क्या चल रहा है देखो आसपास की यार। अफरोज मैंने ही ये खोल के बैठा हुआ था, मैं अपनी ही लाइव स्ट्रीम अपने मुंह के सामने। अब मैंने बंद कर दिया, मतलब मुझे बताना चाहिए। Now it's all the gameplay and just me talking now. Really hope BC Bandina hurry up, Frost bhai. बाकी ओ भाई हो क्या कर रहा है भाई? लाइव स्ट्रीम पे के मैं आग लगाने की कोशिश करी जा रही है घर में। बहन चोद भाई, मजा आ गया भाई। क्या मजा आ गया ना लाइव स्ट्रीम पे देखने, हुआ मजा आ गया। क्या मोमेंट कैप्चर होगा भाई, क्या मोमेंट कैप्चर होगा। You're not going anywhere. इसे लीडर लेके आओ जो ये भाई है। अरे अफरोज मेरी ना भाई आ रहा हूँ एक बार, अगली बार तो मेरी जान अफरोज भाई से मिलो। अरे एक और चेयर कुछ लाओ यार इस पे यार। रुको फिर रुको, ये सब नहीं अफरोज मेरी जान, ये आपके भाई 2 बार अलीगढ़ आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अभी तक। दूसरी बार आएंगे इंशाल्लाह, मैं आपसे मुलाकात जरूर करवाऊंगा। ये दूसरी बार में इंशाल्लाह जल्दी पहुंचेंगे और चीते और श्री लौटा है। Let's go! How are you? That'll work. देखते हैं अफरोज और चीते। देखो ये तो देख ही लिया होगा पहले भी यार। भाई अकेले गोल्डन और सुट्टा पी रहे हो। अरे अफरोज मेरी जान, बस यार बात नहीं है अफरोज भाई, अकेले ही चलानी पड़ेगी यार। इंशाल्लाह मैं सेकंड वीक में आता हूँ और चलाते हैं एकदम सभी भाई मिलके अच्छे से। Get out of my way! You're mine, shorty. गांड फाड़ी हुई थोड़ी सी हीलिंग फैक्टर का गेम वो दिखा रहा है। ये दिखा This game is also going to go insane. Like Spider-Man से भी ऊपर मुझे लगता है इसकी बहुत छोटी है अपने वक्त में।
अल्टरनेटिव वो दिखाया सेबर टूल भी बहुत क्रेजी दिखाया भाई इसमें शीश चलो यार समर गेम फेस्ट टाइम गाइस जिसका इंतजार था 1.5 मिनट में हो रहा है 1.5 मिनट हो गया Oh fuck! We missed it! 1,260 case of what's next. You know. We missed it. कितने लोग हैं? स्टीव हैंस यहाँ 600k. Damn. 600k is good भाई. For a side event, it's good. क्योंकि यार अब मैं वॉल्यूम बढ़ाने वाला हूँ इवन इफ इट विल कम एट द सैक्रिफाइस ऑफ मी टॉकिंग तो कोई मेरा अब सुनना यहाँ पे मैटर नहीं करता है लाइव स्ट्रीम देखो चीतों लाइव स्ट्रीम देखो लाइव स्ट्रीम एंजॉय करो भले मेरी आवाज बन जाए मेरी आवाज करे बनाने चाहे सुनता लेके बैठो और एंजॉय करो अरे इसको हटाओ यार Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. This man has single-handedly kept gaming events and announcements and live streams alive. Yes, you guys are prepped and ready. It's a good one, don't worry. All right, hello everybody and welcome to Summer Game Fest, gaming's biggest global showcase of what's next. You know, we started SGF back in 2020 because we didn't want to lose that magic moment every June when gamers around the world come together to hype ourselves about the future. New worlds, new stories, new characters, and yeah, maybe the return of some fan favorites too. This is our 7th and biggest SGF, and I have to say, guys, the magic is back. We have a great show for you today. Now, over the next 2 hours, we, alongside some of the world's most talented game developers, are going to show you why gaming's best days are right ahead of us. What I love about SGF is that we put platforms and rivalries aside. It doesn't matter where you play, everyone is welcome here today. And right now, everyone has a lot of games to play. As you can see behind me, in just the first 5 months of 2026, Steam saw a record-setting 9,265 new game releases, and that's up from 7,800 last year. There are now more games and more creators than at any point in the history of this great medium. Now, sure, a cynic might look at those numbers and think, how can anyone possibly break through with their game? But then, great medium. Now, sure, a cynic might look at those numbers and think, how can anyone possibly break through with their game? But then, you look closer. So far this year, 14 new games are estimated to have sold more than 1 million copies on Steam. 10 of those, they come from independent publishers. Isn't that great? Absolutely, and most of them were brand new IPs like Mugenic. Let's break this down. Let's just break this down. Slay the Spire, of course, होना ही था. Deck building का finest game है यार ये अपने उसमें. Subnautica 2, one was a cult classic. Resident Evil 9, of course. एक खेल लिया, दूसरा है अपने पास Crimson Desert खेल लिया. Mugenic, Windrose बहुत अलग फट गया था. Forza Horizon 6. I have not heard about Scritchy Scratchy. ना ही Heroes क्या ये of Mighty and Magic Golden Era. Far Far West. I don't know. आधे गेम तो मुझे इसके पता नहीं है. Windrose or Far Far West. That tells you something important. Players, you guys are hungry for new experiences. You want really great, so congratulations to all those games. Now, you know, some games, they become global blockbusters, but others actually find smaller, passionate communities that love them deeply. And today, both of those kinds of success matter. The truth is, not every game has to be for everyone. That's what makes this medium so exciting right now and makes SGF so rewarding. Because this show helps drive discovery. I hope you find your next favorite game today. So get ready to get wish listing. Should we get on with the show?
Okay. It's gonna be a fun ride. So let's get started with our preview of what's ahead with our first announcement. Whee! We are expecting some very big things from this year. GTA 6 का trailer, तुम्हारा I don't know, multiple other चीजों में बहुत बड़ी चीजें एक्सपेक्ट करी जा रही हैं इससे। ओह, ज़्यादा ऊंचा गया है। क्या यार, जो भी गेम आए उसको गेस करने की कोशिश करो यार, कौन सा गेम हो सकता है ये? This looks good. Whatever it is, it looks good. Yes? So, you're the American who called earlier. The sister of the man on the third floor. Welcome to Paris. It's so nice to meet you. It's freezing. Come in. Come in. We don't want you to catch a cold. Thank you. I hate to say it, but your brother is, well, quite odd. In we go. ये कोई हॉरर गेम लग रहा है, बहुत गंदा वाला। What is it यार? ये तो रो। Oh là là. Mais quelle pagaille! मुझे बस ये कैमरा दे दो और मैं निकल जाता है। Such a mess again. कैमरा और भाग जाता है यहाँ से। Think, I just cleaned it up a week ago. It's like a boulder rolled through here. Huh? Ah, the delightful biscuit. I'm sure he won't notice if we help ourselves. Oh, I'm so sorry. कौन सा गेम पहला? It must be the maintenance man from this morning. ग्राफिक्स वगैरह एकदम अलग जॉनरा है इसमें। I'll bring some nice coffee to go with the biscuit. Fuck यार, हाँ सही बात है। अबे रेसिडेंट इविल का स्टोरी सीक्वल तो नहीं है ये? नहीं, ये बुढ़िया कहाँ से आ गई थी? Still, I don't know भाई। भाई तशरीफ फट जाएगी अगर रेसिडेंट इविल रिलेटेड हुआ है। भाई सच में बहुत गंदी फट जाएगी मेरी। भाई चलो थोड़ा सा करो। हेलो। सही? रेसिडेंट इविल में क्या ही होगा? रेसिडेंट इविल का I don't think so. पर नहीं, इतना रियलिस्टिक नहीं है भाई। इतना रियलिस्टिक हो भी नहीं यार, रेसिडेंट इविल क्या बात कर रहा है? पर रियलिस्टिक गेम है अपने में पूरा। What a way to start, भाई. Code Veronica. भाई. अरे दोनों surprise release आ रहा है. भाई ये crazy भाई. Capcom on a roll. What a way to kick off the show. Resident Evil Veronica revisits a classic title from the Resident Evil universe, reimagining the experience for today's players. Thank you to Takeuchi-san and Capcom for that incredible news. Now, some surprise breaking news from one of the top independent game studios in the world. W opening, bhai. Hello there, I'm Cuphead here at Studio MDHR headquarters. And today, we have a special announcement for all of you. Remake के बहुत पहले से बात चल रही थी, what the fuck? Thanks
Jeff. I am thrilled to... Confirmed 2. Great news. All right. Well, now please join me in welcoming my... To revealing more when the time... to tell them. A new fast-action platform shooter with arcade-quality graphics and amazing sound. Mighty Cuphead Adventure. Only from Studio MDHR. नहीं कपहेड का यार वो DLC आई थी कपहेड का कोई वो नहीं ये मॉडर्न पहली बार वो कर रहा है रीमेक बना रहा है इसका. You know I love my puppets, that was great, and there you have it. 2 brand new games from Studio MDHR up in Canada with Mighty Cuphead Adventure, a true 8-bit action platformer coming to consoles and PC, and then a brand new hand-animated Cuphead game has been confirmed too. Great. And a brand new hand-animated Cuphead game has been confirmed too. Great news. All right. Well, now please join me in welcoming my co-host and partner in a new game discovery website called Looking for Game. It's Lucy James, everyone. Thanks, Jeff. I am thrilled to be back here at Summer Game Fest, and I'm excited to share in so many incredible announcements. Now, this next one is very special to me. It's a game we've all been waiting to see for a long time. Do you understand? Yes. I understand. Classic horror game. Sheesh. Hi, I'm Al Hope, creative director of Alien Isolation 2. And I'm Alice Topico, art director of Alien Isolation 2. On behalf of the whole survival team at Creative Assembly, we're very excited to share our return to the survival horror genre. It's been 12 years since we released the first Alien Isolation, and we're continuing what we started, creating an authentic new chapter which builds on that core isolation experience of escaping the terrifying, unkillable, relentless aliens. And this time, we're unleashing the alien on an unsuspecting colony world. From the claustrophobic confines of the colony itself to the exposed and storm-ravaged landscape surrounding it, Kurosaki Station is a new hunting ground for the ultimate apex predator. Players will face a desperate struggle to survive and escape, and we cannot wait to show you more in the future. Thanks. Solidify the horror genre. Number 1 aggressive बोलना. Thanks so much, Anna and Al. Today, we are honored to have one of gaming's true visionaries here with us in the audience. For more than 2 decades, his work has reminded us that games can be emotional and deeply human. From Eco to Shadow of the Colossus to The Last Guardian, he has left an unforgettable mark on this medium. Please join me in recognizing the legendary Fumito Ueda-san. Ueda-san, great to see you. And now,
let's talk about his next game. A few years ago, we gave you an early glimpse at Ueda-san's next game, then known as Project Robot. Well, now, it's time to step deeper into the mysterious, unsettling, and epic world that marks Ueda's first game in a decade. Let's take a look! हर कोई 10-10 साल बाद जाके एकदम कमबैक मार रहा है अरे यार अरे भाई एकदम आ गया एकदम फिलोसॉफिकल क्वेश्चनिंग लाइफ एक्सिस्टेंशियलिस्ट वाला गेम हुआ है बहुत जैसे उसका हर गेम होता है उसका हर गेम लाइक सो फिलोसॉफिकली बेस्ड like escapes makes you question life Does that look incredible? Oh, all right. I cannot wait for Gen Atlas. Thank you, Ueda-san. All right, well, next we travel to the east, to China, circa 848 AD. China? Blood Message is a cinematic single-player action-adventure game from NetEase. You are a messenger who embarks on a perilous eastward odyssey with your son, fighting against impossible odds. ब्लैक में वुकोंग का सीक्वल का ट्रेलर है क्या बोल दियो ब्लैक में वुकोंग का कुछ ले आया ब्लैक में वुकोंग का ही तो है वो रुकना जरा या तो वो है ब्रो नहीं ये कुछ अलग है उन्होंने इन्फेमस बनाया था एक तो मैं यार इन लोगों के सभी स्टूडियो के नाम This is not black and 从未有人坚守如我等之久。今日天枪大捷，以寡破众，背对着当即首功。 Chinese have also like entered and dominated the game market. 好剑，又进击了！该你了！阿爷。是死，不朽！ खेल भी ले इंसान तो बहुत मेहरबानी होगी इंशाल्लाह अबे भाई ये क्या जॉन स्नो लेके सही बात है that has to be a reference that message भाई ये भी
कर रहे थे एक टाइम पे ऐसा लग रहा साला कभी कास्टली रॉक में आ गए कभी विंटरफेल में आ गए भाई This is definitely a reference. This भाई is बहुत definitely- वाली अच्छा nice. 真到了那天，我的孩有像阿明一样的孩子，就再也不用怕没有家了。 ये तो है ना हो तो ये भाई आपकी स्ट्रीम पे कमिट होगा अभी का वक्त है बस ये हाँ भाई ये भाई ये कहीं लिखो बहनचो ये करना पड़ेगा bloodmessage.com कल से प्ले टेस्टिंग शुरू हो जाएगी ऐसन कैसन हम भी देखेंगे ओए भाई खेलना पड़ेगा कल ठीक है आ गए चल बे इसका मुंह कैसे मत कर चल बे रास्ते में क्यों आता है Now please welcome a game developer who is visiting the US for the first time in 2 decades. From RGG Studio, it's Masayoshi Yokoyama.こんにちは、横山です。本日はストレンジャーズ・アンヘブンについて新しい発表がございます。まずはこちらの映像をご覧ください。 Hello everyone, this is Yokoyama. Today, we have an exciting new update about Stranger Than Heaven. First, please take a look at this. 調べたぞ、お前らのこと。海の向こうじゃアジア人ってんでのけ者にされて。日本じゃ毛頭扱い。俺は何人なんだって何度も思ったろう。敵討ちか。つまらねえことに人生使ってんだ。大統領。この件にけじめをつけねえと俺の人生始まらねえんだ。कैरेक्टर्स रिवील करें दो चार समझेगी तो उस वक्त कितना बजट है कितना बजट है भाई तुम्हें जानते हो डेड आर्टिस्ट which is the biggest hip hop black artist इसका लाइसेंस कितना महंगा होगा खरीदने में भाई कितना पैसा आ गया इन पे बहन जो स्नूप डॉग को ले लिया बेटे को ले भाई सवाल है क्या बिगी भाई बहन चोर भाई ये दोनों ब्रो भाई गलत कर रहे हैं गेम में भाई स्नूप डॉग भी ऐसे अरे इसमें सब है यार ब्रो ओ फक चौधरी नहीं उसके साथ वरना मैं यहाँ पे टूपाक बन जाऊंगा और काला उतना बड़ा कर दूंगा अपना भाई जैन को आ रहा है यार पिछले याकुजा गेम्स पढ़ेंगे क्या नहीं बिल्कुल नहीं Yokoyama, we got a lot to talk about. First of all, we have a release date. 本作の発売日は2027年1月15日となります。そして先ほどのトレーラーには新しいキャストの情報が含まれていましたが、その件に関してはこの方に語ってもらいましょう。 Stranger Than Heaven will be released on January 15th, 2027.
As you may have noticed in the trailer, we revealed some interesting new cast members. To tell you more about that, as you may have noticed in the trailer, who would have fucking thought भाई बहुत गलत टाइम पे बनाई हमने स्ट्रेंजर देन हेवन की वीडियो बैड मां की झूठ फिर बनाएंगे भाई भाई तुम इस फ्रेम को देखो भाई revealed some interesting new cast members. To tell you more about that, I'd like to bring out a special guest. Please welcome Snoop Dogg. Snoops! Everyone's talking about this game. It's so good to have you here, man. So you teaming up with Yokoyama. Tell us, how does this happen? Why do you want to work with RGG? I mean, I'm a big fan of Sega. I've been playing that game since it first came out, and you know, to be associated with such a great game, with such a great person like this, and the team that they put together, it's an amazing feat for me. So I'm happy to be a part of it. Now we got to talk about what just announced in this trailer. How's Tupac being a part of it? Person like this and the team that they put together, it's an amazing, you know, figure for me. So I'm happy to be a part of it. We got to talk about what just announced in this trailer. How's Tupac being a part of it? You know, the Tupac estate and my son and myself, we work very closely together, so it just made sense to put him in this game because his likeness and his spirit still lives on, and I just feel like it was so connected to what we're doing. So, what y'all think? Game looks insane. I'm sure you got more surprises in there too. I know the song sounds great, but we're looking forward to hearing more on Stranger Than Heaven. I also want to ask you though about something a couple years ago at TGA. You and Cordell talked about Death Row Games, or something that you guys want to do. Any updates on what's happening there, DRG? Yes, sir. Death Row Games. You know, we're building a hip hop gaming universe, bringing an authentic culture to life. You know what I'm saying? And we just got a lot of plans that we're planning on actually bringing to life in the next couple of months. Okay, we'll hopefully hear more on that soon. Yes, sir. Thank you much, Snoop Dogg. चिल्ला रहे हो ना तो आवाज कम आ रही है मुझे भाई मैं चुप हूँ क्या कह रहा है? ये चुप हो भाई वो बोल रहा है भाई चुप हो बोल रहा है भाई थोड़ी देर में स्ट्रीम में प्रॉपर लड़ाई बन जाएगी तो यूनिट रहना भाई जब ये बोल रहा है भाई आपको मैंने कहा कोक निकाल दो यार मेरे लिए निकाल दो यार चोरी कर रहे हो साला अपने बमले में चिपका के बैठ रखे हो दो यार कोक भाई तमीज से निकालो क्या कर रहे हो हिलाया कम करो भाई Death Row Games, you know, we're building a hip hop gaming universe. Cordell talked about Death Row Games is something that you guys want to do. Any updates on what's happening there, DRG? Yes, sir. Death Row Games, you know, we're building a hip hop gaming universe, bringing an authentic culture to life. You know what I'm saying? And we just got a lot of plans that we're planning on actually bringing to life in the next, you know, couple of months. Okay, well, we'll hopefully hear more on that soon. Yes, sir. Thank you very much, Snoop Dogg. Thank you for joining us. Yokoyama-san, Jamil, appreciate it. Thanks, guys. Fantastic. Crazy, bhai. More crazy stuff to come. All right, next we're excited to announce the stunning debut title from a new studio in Sweden. Hex is an open-world action-adventure game from key creators behind The Division and Little Nightmares. You brave the wild north as researchers stranded in a mind-bending, player-shaped procedural world. This is a very cool game. Take a look. Dead astronauts, damn. Haven't heard of this one. Revolutionary shit, भाई. आप क्या मार चुका है? Stranger Than Heaven ने Stone of the Millennia. Not Stranger Than Heaven.
Crazy. Well, Yokoyama, we got a lot to talk about. First of all, we have a release date. 本作の発売日は2027年1月15日となります。そして先ほどのトレーラーには新しい伝えましょう。Stranger than Heaven. Notice that. भाई, who would have thought भाई? अरे भाई स्नूप डॉग बैठ के साइड क्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे। Literally भाई. इसने अपना भी गेमिंग स्टूडियो खोल दिया। Death Row Games. Death Row Games, in which he's like an interesting development. हाँ, ये कुछ genuinely भाई, genuinely. Trailer, we revealed This was the biggest one after that on. Such a great closely together, so it just made sense to put him in this game because his likeness and his spirit still lives on. I just feel like it was so connected to what we're doing. So, what y'all think? नहीं, उसके बारे में पूरा Game looks insane. I'm sure you got more surprises in there too. I know the song sounds great, but we're looking forward to hearing more on Stranger in Heaven. I also want to ask you though about something a couple years ago at TGA, you and Cordell talked about Death Row Games. It's like a mech game basically. Any updates on what's happening there, DRG? Yes, sir. Death Row Games, you know, we're building a hip hop game. अरे हटाओ, शिवम भाई आ गए, सब करा जाएगा। अब शिवम भाई को फुल इन करा जाएगा, अब चुनी नहीं। अरे बाद में दिखाना ये। नहीं। ये तो एक नया। Alien Isolation। हाँ, ये देखा मैंने। मैं आते देख रहा था इसको। Alien Isolation 2 God वो। Good। ज़्यादा नहीं हो रहा। यार, RE5 का रीमेक आने वाला है। Thanks so much, Anna and Al. Today we are honored to have one of gaming's true visionaries here with us in the audience. What? RE5 का रीमेक आ रहा है। मैं ब्लड मैसेज लाइक आई हैव बीन मुझे पता था उसमें रिलीज नहीं It got a new trailer by basically. अब वो मैंने देखा थोड़ा ये this was crazy. उसने दो लाइन ऐसी लैट्रिन बोली ना नहीं चाइनीज Identical to fucking भाई अब आप देखो अब आपको कास्टली रॉक की भी याद आएगी विंटर ये तो मर रहा है इसमें में पक्की बात तो पता चल रहा है साफ साफ इसका तो मोफला मैन आके इसमें अपना चार्ट रिएक्टर खोल देगा भाई ये मरेगा ये इस गेम में मरेगा एक सेकंड भाई ये जरा देखना मुझे बताना है इफ आई एम गेटिंग क्रेजी इज दिस अ नॉट टू सेकिरो शैडोज डाई ट्वाइस ट्रेल कवर आर्ट में लिटरली उसका यही वो नहीं है बिल्कुल भाई आइडेंटिकल तुमने देखा हो कवर आर्ट में लिटरली इट्स द सेम पोज आगे करो मेरा मस्त सीन ये मैंने देखा था ये भाई ये Aragorn Aegon Targaryen the sixth of his name my soldier's great आगे करो चलो भाई एक सेकंड रुको बकचोदी नहीं रुको
इसका वो पल्सेशन ये वही है, ये इसका बेटा है जो बड़ा हो जाता है फिर ये वही है so this like this jump across like bro हाँ ये सेकिरो का इसमें क्या वो है आगे कुछ है क्या सेकिरो से नहीं बेटी हाँ बेटी ओके जिस तरीके से ना पोज हेल्ड करके वो करा गया था that was not to Sekiro's good I think Now please welcome a game developer who is visiting the US for the first time in 2 decades. From RGG Studio, it's Masayoshi Yokoyama. More crazy stuff to come. All right, next we're excited to announce the stunning debut title from a new studio in Sweden. Hex is an open world action adventure. किसका है? मेरा. Yes. Yes. भाई ये कुछ और. Dead Astro. ये सारा एग्जाम ले आगे से कुछ नहीं कौन सी लैंग्वेज से अच्छी बात है To see more from Hex. It looks absolutely stunning. We have much more SGF to come, but first on June 14th, Dead by Daylight is celebrating its 10th anniversary. Watch this closely because here's a little tease of what's ahead. I'm like Hellblade भी आ गया ना. अरे भैया माही छोड़ देंगे क्या? बहुत सही लग रहा है इतना गेम लग रहा है मुझे तो यूज कर रहा हूं कर रहा हूं ओ पता नहीं कितना सुनते वाले वो खाली दो और है वहां पर
Zero spoiler. Is it dangerous? Edward. Private Henry. Is it dangerous? Wouldn't be so nice if it weren't. Yup. Gentlemen, we do not plunge headlong into folly on the orders of a single madman, but act according to our own collective madness. So I'll put it to the vote. All those in favor of storming this cove and taking this ship, stomp and shout Can you feel it, Ali? We're moments away from the grandest prize of all. After you, Captain. Path ahead is dangerous. After you, Captain. Path ahead is dangerous. Don't save me a spot in hell, Shaka. I am coming soon. जुलाई के महीने में स्टॉक्स होंगे यूबीसॉफ्ट के Welcome back to SGF. That was Assassin's Creed Black Flag Resynced, which is arriving July 9th. Now it's time for the announcement of a game that reunites one of the best action game developers in the world with a legendary franchise. Reuniting the greatest action game. सबने वही खेला है You guys having fun yet? We are just getting started, believe it or not. All right, well, that's another TMNT game from Platinum Games. I cannot wait to learn more about Last Ronin. Now, please welcome two-time TGA loser for Expedition 33 and Final Fantasy 16. It's Ben Starr, who voices the Visitor in Fortnite. Hello, Summer Game Fest. For the past little while, I have had the incredible opportunity to step into the world of Fortnite as the Visitor. And today, I finally get to share a glimpse of where that journey is heading next. We've been working on this for a long time. A new season is about to begin, and everything is about to change. Let me show you what's coming in Fortnite's next season, Runners, launching later tonight. Until power breeds chaos. That chaos is spreading with these sprites. Creatures born from 0-point energy. They can make you stronger, faster, more dangerous. No one can resist that kind of power. So we must secure them.
Now, if you're wondering how we end up on this new island, you'll have to jump into the shattered event. Want to stay to the loser. ये सिर्फ ये अनाउंस कर हाँ लौड़ा जिस दिन सब बकचोदियों से निकलेगा तब जीतेगा ना लाख गाली दे दो इसके चक्कर में एपिक गेम्स की वो दुकान About one of the most influential sci-fi franchises ever created. Fortnite के चक्कर में Fortnite में On Earth, mankind measured time by seasons, not silence. For a moment, the future seemed promising. Out here, that promise is alive. This is not Ace Fighter 8. क्या बैडी है भाई बहुत बैडी है Every breath taken. Oh fuck, really? अबे really माँ का Legends do. झूठ भाई I see it in everything we do. क्या हो गया ये भाई इनकी माँ Generally like most people. माँ छुदी है भाई समझ में Maybe if we अबे भाई क्या बकचोदी कर रहे हैं भाई ये क्या चल रहा है भाई ये माँ मानता हूँ भाई बकचोदी तो मत कर भाई I'll be cute. There's one darkness coming for us. It remembers one man. The pilot. पता नहीं क्या बैठ चो उड़ रहा हो कोने में उसके गांड में लेगा थोड़ी देर में माल है तो वैसे बकचोदी करेगी Thousands of games launch every year, so finding your next favorite can be tough. That's why I'm launching my new newsletter, Looking for Game. Thank you. I'll be curating and selecting games that deserve your attention every week and sending demos and exclusive playtest invites straight to your inbox. Head over to lookingfor.game to sign up with player.gg. Speaking of fun, unexpected games, this next title comes from a solo developer, Adrian Mulero from Spain. It is a co-op physics game about two geese and one very fragile egg. Okay, ready to be a parent? Sure, don't worry. This is a piece of... Are you hard? Extremely. Team of developers who come from Naughty Dog and Infinity Ward and other amazing studios. Over the past half-decade, they've quietly been working on an ambitious new project. Here is the global announcement. Degrading. This is like they are specifically made for The cruel. The lie. Let's go. Yeah, go win. So that's what I say when I look at someone like you. I think I've seen her. I think I've seen him too. Generally like most people. भाई टूपा आ गया कोई Coming for us. You're not one of them anymore.
Yeah, well, that's temporary. Just like you and me. You guys don't understand the threat. Not like we do. I go to war when the enemy to survive. So be it. For now. And the winds fight those things together. Or die alone. No, do not touch him. क्या चुदता है भाई ये अच्छी बात है, शर्म भी नहीं आती है और उसके बाद आप गेम देखो अरे तो ट्रू गेम प्ले की तो फुटेज थी Fight together. हाँ इसमें गेम प्ले की फुटेज वो गोलियां जब चल रही थी वाली गेम प्ले की थी अरे मैया फिर कहते हैं चीखता हूँ For over 18 years, Jacob and I have developed character-driven games with the goal of thoroughly connecting design and story. In Crossfire, two opposing operators must form a temporary alliance. Depending on one another is their only chance of survival. To support this narrative, Layla dynamically adjusts her stance to react to the complex terrain and the enemy's line of sight. It fundamentally changes your relationship with the environment and becomes an active skill to master. Shout out to our amazing team at That's No Moon, who are meticulously crafting Crossfire. It's for all of you who, like us, love high agency, single player, story driven games. Thank you. Amazing. Thank you so much, Jacob and Taylor. Now, last year at the Game Awards, we introduced the next game from Remedy Entertainment. Here's a new look at the mind-bending world of Control Resonant. It's been 7 years. The oldest house has fallen. Everything we tried to contain is now loose in the streets of Manhattan. This was caused by a new type of hostile resonance. It is beyond anything that we can currently measure. It's all quite terrifying. And fascinating. Keep searching for the solutions in every way we can. Before it's too late. Right now, it's time for another Summer Game Fest exclusive, the announcement of the next game in a storied franchise. मेरे को broad strokes में आगे नहीं चीज़ समझ ये क्या है? कीना कॉस्मोरा We all have our own reasons for coming to this vast frontier. But for our guild, we who protect this land, one reason stands above all others. Our wonder. You feel it too. We see it in your eyes. Wonder at the
astonishing power that shapes this land of awe. At the great spirits to whom we are bound. At the gods who hold dominion over all. We cannot guarantee your comfort or even your safety. But if you yearn for horizons unexplored, for fellowship and purpose, for a cause worth dying for, to you we can promise magic. To everyone watching both here and live online around the world, I'm Colin Johansson, the studio head at ArenaNet, and I want to thank you for watching the exclusive Call It Great launching on Guild Wars. The only MMO I've played is last year. Thanks, Colin. Is coming this October. And now, this is Galactic Racer is coming this October. And now it's time to head to a brand new planet, Dervenakos. Now this is pod racing. Welcome to Dervenakos, where champions are born and losers. Intergalactic racer, yaar. Fuck off. इसकी होगी निश ऑडियंस सब नहीं है। इसकी होगी निश ऑडियंस सब नहीं है। ये क्या? ये वाला कई वाले गेम। Lightness का नहीं अब मिल रहा है क्योंकि मैंने से बहुत पहले बोल रहा था ओगिनो फिशिंग सिमुलेटर है। क्या हो गया कहां छूट गए हम जाके आगे नहीं अच्छा बताओ अगले महीने Seriously, huh, Divina? A few years ago, we announced Sega's plans to bring back many of its classic franchises, including Jet Set Radio and Crazy Taxi. Another one is Virtua Fighter. Today, we've got your first ever look at the surprising scale and scope of the next installment. This is Virtua Fighter Crossroads. 1 million fucking internet players. Talking about your ex? Hey, I've got an idea for you. Hey, it's Yellow. Bet you're hungry after this morning, huh? Same as usual? Your sister's really taking this whole job thing seriously, huh, Divina? I know. They really weren't kidding about this being a fighting town. We're all fuck-ups. Otherwise, we wouldn't be living in Villa Sapara. Kill them all! Hey, it's me. There he is! Shit! This is not gonna blow over, Cielo! You fucked with the Chinese mafia!
You play the part of a fighter, but you are lacking in Kung Fu. Rise over the cries, city of blood, sweat, and survivor. Virtua Fighter Lives rolling like dice. Once you're inside, there's no surrender. That's Pai Chan! Who's Pai Chan? What? It's been 25 years since RuneScape was born, and 20 years tomorrow that Duriel 321 wreaked havoc in Falador. Finally, this legendary universe is coming. Few. Our shedding seeds may pile. Sway the lies. Some guys leave it to luck. Let it ride on a roll of the dice. Not me. You can have all the luck in the world. But what matters is the choice you make when the cards are on the table. A young Don Salieri from the original Mafia, man of honor, time. I was born to be the collector, to protect a world I cannot be a part of, destined to be feared for what I am. It is my fate. I have devoted my life to facing them. Those granted the power to raise souls. Those corrupted by their gifts. Tilting the ancient balance toward cataclysm. But at last, their debt is due. Every choice, every breath has led me to this moment. As the moon bears witness, I take the first step. My time has come. I am ready. I think I know which series this is. 1880. There is one. Thank you, Jeff. Thank you, everyone. 1666 has been a monumental and emotional journey. David Lynch once said, the film is the talking. That's how I feel today about the game. Instead of explaining features, I'll simply say this. As of right now, the prologue is free to download on Steam and Epic Games Store. It's a journey. कम से कम 3-4 गेम के डेमो अवेलेबल है अभी भाई इसको भी दिल लिख लो अरे हम पूरा वो करके सब निकालेंगे अभी चिंता नहीं Thank you, Patrice. Still to come, we've got a lot of great announcements for you, including a special surprise guest. Who's that? What? Wait, that's Billy from Saw? No fucking way. Hey, Billy. Jeff Keighley. Hello. I want to play a game.
Oh, you want to play games? That's great. We're doing Summer Game Fest. This is all about playing games. Perfect. Roll the tape. No fucking way. You heard the puppet. Oh, shit. Roll the tape. Years have passed since the genesis of your legacy. They call you a monster, but I call you a prophet. Pain is our only true path to redemption. It strips away the lies that people tell themselves. Only then do they get to see what really makes them tick. A sacrifice must always be paid in blood. Live or die. Your book, bound in blood, inspires those who are worthy. The spiral bleeds ever deeper. Let the games begin. Mortal Shell 2 approaches. Humanity's fate will be determined by one final. मैं बोल रहा हूँ everything about this game is biblical. This is biblically accurate angel. We are ready to bleed Bara. Yes. Yes. Are you? This The veil between realms is unraveling. Life or death. You alone will decide. Lords of the Fallen 2 wishlist now. That's right, Lords of the Fallen 2 is also coming to Steam this fall. Next up is a brand new game from BitReactor, a studio formed by some of the most experienced developers in the tactics genre. This is Star Wars Zero Company. Intelligence was just briefed of Separatist fleet massing in the Sierra Leone system. Come in. साइलेंट है? नहीं साइलेंट दिखा दिया आपने। Oh shit! Please. Fuck off, man. You don't give up easy, eh? Neither do I. You certainly have reasons to hate me.
my son. You've ruined my life. We crave safety. Evil? Am I evil? They adore me. You're a pawn in Princess's hands, nothing more. This won't end well for you. I've done the unthinkable for my own family. Determination is not enough to defeat your fate, Dawnwalker. How many innocents did you drain dry? Maybe we aren't so different after all. Hello everyone, my name is Konrad Tomoszkiewicz and I'm the game director of The Blood of Dawnwalker. What you just saw was an invitation to join us on an adventure. Adventure through eras and cultures in our story-driven open-world dark fantasy saga. The first part, a CGI, shows where our saga leads to, a present-day adventure. Been hard at work on a new project. And today we're revealing it for the first time. It's crazy. crazy that this is crazy. Liv Houston! Look, I know fans have been dying. Yes. Yes! Betrayal! And more over the Among Us series. Enjoy. Towards a crewmate. Wow, that was a lot of screaming. Biggest surprises at Ripping off of the face. Kill the imposter! Would you believe me if I said some of our biggest surprises at SGF are still to come? Stay tuned, and it turns out there's more coming from one of this year's best reviewed games, 007 First Light. Here's a first tease of a new story mission coming later this year. Expansion. We've received an urgent call from Aleph, James. King Bavma requests MI6's help with a matter most sensitive and he's asked for you, personally. Our alliance with Bavma is fragile at best, but if he has what he claims to have, well, M figures the reward is well worth the risk. Go back to Aleph and find out what this is all about. Best of luck, 007. Who the fuck is Bomba? Do you know it? Find out what the... A time, someday.
I'm looking to find the source of the disturbance and end it. To do that, I need a computer waves ka Kuro game CD. Maybe this is all a brain dance, a simulation. Time to knock the rust off! Maybe the two of you really are from another universe. Run. I'll erase you at the finish line. Deleting your ass. Come on! Eat less, I can feel it. That nightmare test of Discord is looking for us. That was a look at what's ahead for Wuthering Waves and its collab with Cyberpunk Edgerunners on June 8th. Now, if you want to track all the games shown today, head to player.gg/SGF to see the full lineup and wishlist your favorites across all platforms. Right now, it's time for news on a massive expansion coming to a franchise that has been on this stage. Wyverian negated the weight of buildings and mounted the sky. I can't stop wondering, how can all this exist up amongst the clouds? They can affect the environment with just their presence. A more than a natural disaster. Too powerful to tame, too difficult to reproduce. Sounds like an elder dragon. बट फिर भी भाई वो भी रिसर्च कर रहा है तो भी पॉलिश ये आ गया लाइक कोड कराने का शुरू हो गया अपने $1 बिलियन यॉट में बना रहा है भाई उससे पूछेंगे भाई अंदर बताना जरा क्या हो रहा है अपने प्लांट्स को पौधों को पानी दे रहा है भाई You know it's all for nothing. Still you press on. ओ भाई ओ अच्छा ना बोल रहा बहनचोद तुम्हारी गाड़ मारने के हम लोग ये लो ये सूखी तौलिया अरे तौलिया नहीं नहा नहीं पाऊंगा Obsession! Step into the dream! I don't like this one. ये डॉक्टर बड़ा है Howling कौन-कौन-सी See the
देखो भाई क्या किया उसने ये क्या कर रहा है यार भाई Take your time. Enjoy. That was a new look at gameplay from Swords of Legend, a fantasy action RPG. There you saw a boss fight against Kong Kong Zi, with each move pulled from real centuries-old Chinese magic tradition. Now, how about a little toy car magic? Get ready for lots of loop-de-loops and massive jumps with the announcement of the biggest Hot Wheels racing game yet. She got introduced last year. Hot Wheels. बस भाई जितना मजा बच्चे खेलते हैं ये तो दैट इज लाइक दिस सर्टेन गेम्स ना मैं टॉलरेट ऐसे कर लेता हूँ उनका रिव्यू के भाई हमें थोड़ी इनकी फैमिली Let's do it! Happy anniversary, Sonic, and happy birthday, Sega. All right, now the world premiere of a project that depicts the entire story of a famous anime from beginning to end. Dedicate your heart to this. शुदाफा निकले भाई मुझे बस पेट्रोल स्कीम चाहिए मुझे भाई पेट्रोल स्कीम चाहिए This can be turned into one of the greatest of traditional gameplay that has support भाईやっぱり巨人って素晴らしいな。後のことは仲間に託す。俺たちはどうすれば報われるんだ。この目で奴らが捧げた命の行方を見届ける。ありがとう。ごめん。さよなら。
From many of the creative leaders behind Forza Horizon comes a new cinematic open-world driving experience. Set in Monaco and the French Riviera, where the worlds of pro and underground street racing collide, this is Clutch from Maverick Games. मैंगो जूस ही चाहिए We have 2 drivers dead. 3 more in intensive care. I'm done. My friend said you can help me. Some people are meant to be outlaws, Theo. Think about it. I did all that for you to get out of trouble. Now I'm in deeper than when I started. I can't be taking risks like this. I'm a lead driver in the R1K. I've tried to help you. I'm not going to jail for you. The dead won't rise, but their sons will. Plant fear or respect. One. We have lots more Summer Game Fest ahead, and trust me, you definitely will want to stick around. Right now, here's a new look at Sea of Remnants from NetEase. Hack-and-slash-action game. Wake up laughing, half a mess, wrong direction, no regrets. Every face feels out of line, that's how I know they're all mine. We don't fit in, we don't care. Broken trucks and broken air. They said grow up at your age. Get your side and not afraid. Make it out, don't look back. Burn this moment till it cries. This one won't let us stay, we'll steal this night. Make it loud. Say we're lost, say we're strange, say we'll fade and drift away. But if memory lets us choose, I'll remember all of you. Hands up, shout it out loud, laughing over the doubt. If tomorrow leads the slave, let tonight decide on it. Make it out, feel the hair. This 1 second, this is it. I don't need a perfect past, just what we're hoping for.
shelf? Guys, is it me or is there something off with this one? Yeah, he seems different. Has he always had that mustache? He doesn't have a mustache. Oh, yeah. Hey, buddy, what's your deal? Howdy, name's Ryu. What's all this mess about me being different? Well, look at that, he sounds different too. What in the Sam Hill? Everyone in Tokyo talks like this. I know what this is. It's called a knockoff. Well, tarnation! Could a knock off do this? Howdy, Duke it! Yikes. The Capcom Summer Game Sale is here. Take home genuine, bona fide, 100% authentic, real deals on select titles. No knockoffs. I can't do it if you're watching. Uh-huh. Ladies and gentlemen, representing the elite ranks of the Ark Society, Mr. Graves! Yellow paint. I hear they scared of it with them I hear they scared of it with them pearls, eh? Yeah. You the best. When I pulled up the line, reppin' my town, when you see me, you know everything. Hey, come back. World of Assassination. पिछली बार किसको लाए थे? Let's start with the villain one. There you have it. Power World 1.0 is coming out on July 10th. Now, at the start of the show, I mentioned we'll have lots of new worlds to explore today, and the return of some long-awaited ones as well. This next game is that last category. It's been a long 8 years. Homicide. 6 total so far. Each case, husband and wife found. Shredded. People are dying. This is my favorite. Some monster is out there. The greatest Telltale games, bhai. Word around the precinct is you're the guy to call. Walking Dead nahi, baap. Bigby, Sheriff, I'll have your job within the rule. Are you living under a rock? You're a raging dumpster fire of a person. You're the reason I'm here. She's a detective. Chapter 5 is up 6 निकल गया. Is that fucking revive the genre? Ready to get to work? It's the second part, right? Proper.
Mamawa don't look human. His lips are sealed, but I'm not helpless. See you around. I was wondering when you'd turn up. Looking for me? Bro, ये peak flying का game है भाई. Bro, the Wolf Among Us remastered is. That's right, Big B is finally back! And as we wait for his new adventure in 2027, check out The Wolf Among Us Remastered this holiday. Now this next game comes from an acclaimed studio that is deep into development on its next project. Night city. The point is outer Muslim Russia. It's not night city. Cyberpunk 2 है पिक्चर बात वही है 2027 में पिक्चर आएगा उसके बाद साइबरपंक 2 That's the beginning and end of it all. How about try taking a hit? Yeah? It's our first mission in a while. Aren't you a little excited? Stop saying Quiet. They're moving. Initiating C3 sync. Ready, Angel. Roger, Kim. Tracking. This is a new IP. Gameplay. Doors closing. It's stellar play. How's it looking? I can't stand crowds. Bro, I recognize that ass from anywhere. Movies, this is always where things go wrong. Hey, It's cliche. Wait, the target stopped. Hearken! The boat's ready! Sequel to celebrate. In the name of the Father! That was a good one. Shift Up is returning to the world of Stellar Blade with an all-new sequel developed entirely by the original team that's here today. Set in the same universe as Stellar Blade, this next chapter continues the story beyond the events of the first game, introducing a new protagonist who you saw there, Evie. It's early in development, and we will have more to share in the future. All right, we're almost done. Not quite. It's been almost exactly 3 years since Street Fighter 6 was released.
Celebrate Blood Rain. Crazy game लग रहा है भाई. Whole new sequel developed entirely by the original team that's here today, set in the same universe as Stellar Blade. This next chapter continues the story beyond the events of the first game, introducing a new protagonist who you saw there, Evie. It's early in development, and we will have more to share in the future. All right, we're almost done. Not quite. It's been almost exactly 3 years since Street Fighter VI was released in June 2023. What's ahead? This is Street Fighter VI Year 4. Street Fighter 6 is already entering year 4. I don't give a fuck. पार्लियामेंट में चली थी. Please welcome to the SGF stage Nakayama-san, director of Street Fighter VI, and Hamaguchi-san, director of Square Enix. I'm so proud of myself. I am new Gaga. 皆さんのおかげでストリートファイター6は3周年を迎えることができました。そして本日ファイナルファンタジー7との特別コラボレーションを発表します。Thanks, Street Fighter 6 has reached its 3rd anniversary, and today we're announcing this special collaboration with Final Fantasy. TIFA はですね、世界中のプレイヤーから愛されてきたキャラクターです。だからこそ目指したのはストリートファイター6の世界で本当に戦っている TIFA の姿です。Tifa is a character loved by the players all around the world. That's exactly why our goal was this, to bring to life a Tifa who truly fights within the world of Street Fighter 6. 衣装や動きまで再構築してストリートファイターのティファとして形にしました。マテリアもそのままではなく新たなバトルシステムとして再設計しています。Everything from her design to movement has been rebuilt as Tifa the Street Fighter. Materia has also been reimagined as a new gameplay system. そして今日はまだお見せできないんですが、ファイナルファンタジーの象徴的な要素もバトルに落とし込んでいます。We cannot show it today, but we adapted an iconic Final Fantasy element to the battle experience. ティファの戦いはまだまだ終わりません。ぜひこれからの展開にも期待してください。Tifa's fight is far from over. We hope you all look forward to what's coming next. ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you to Hamaguchi-san and Nakayama-san for coming all the way from Japan to join us for that special moment on stage. And we'll see you guys again later this year. All right. Well, now it has come time for our final announcement. I know. What's it going to be, guys? Any guesses? No. And frankly, I don't know what I could say to set this moment up besides this. Get ready for the final battle. Long ago, a shadow fell upon our planet. Guided by calamity, one man sought dominion through reunion. By his will, a star fell. A meteor called Final Fantasy 7 to all. third part. That's exactly what. But our planet answered, awakening mighty weapons to stand against this celestial threat. Now, hope endures in those who fight. Long story short, the world's in trouble. Has been for a while. So what are we waiting for? Let's give Sephiroth the beating of a lifetime. You're mine. I'll make this quick. Good night. The sky's the limit. I can do this. I'll make you proud. Just ain't your day.
pigs don't distinguish between friend and foe. Save the planet by killing her protectors. Let us put your faith to the test, Cloud. Never would have made it this far without you guys. And I won't let you down. I promise. There you have it, and no, he's not done yet. Please join me in welcoming back to Summer Game Fest the director of Final Fantasy VII Revelation, Naoki Hamaguchi-san. I'm back! ようやくですね、このファイナルファンタジー7リベレーションをマルチプラットフォームと同時で、発表できたことを本当に嬉しく思います。ここまで来れたのも、この物語を信じ、待ち続けてくれた皆さんのおかげだと本当に感謝をしています。I'm truly delighted to unveil Final Fantasy VII Revelation, which is launching simultaneously on all platforms. And we've only been able to come this far thanks to every single one of you who continue to believe in the story and waited for this moment with us. 今作のテーマは決意です。クラウドたちは最後の戦いに進む。それぞれの決意と向き合います。The central theme of this title is resolve. Cloud and his companions each confront their own destinies and find the resolve to march toward the final battle. そして私自身もこのシリーズを完結させるという決意を胸にこの作品と向き合ってきました。I too have carried a promise in my heart throughout this journey, the resolve to see the series through to its very end. 皆さんに最高の形でお届けします。ぜひ見届けてください。We're committed to delivering this experience in its ultimate form. Please stay with us and witness what lies beyond that resolve. Today, to help guide us on our path, please show me in welcome to the stage. The voice of Vincent Valentine, Matt Mercer. Thank you very much, Hamaguchi-san. It's truly a privilege to be here with you today, if you know me. There's honestly so much to see in Revelation. I think we just kind of need to dive right in. What do you say? Let's do it. Take it away, Matt. I don't mind if I do. As we reunite with our heroes, the meteor looms in the skies above, a constant reminder of your mission and the grave threats you'll confront as you embark upon your journey and face the epic conclusion of the remake series. Aboard the Highwind, your very own airship and the pride of the Shinra fleet, you'll take to the skies and witness our most expansive open world yet. From the outskirts of Midgard to the sun-drenched Mideel archipelago to the warrior nation of Wutai. Simply pick a direction and set sail. But how can you be expected to protect the whole world at once? You'll need to cover ground fast. I am not jumping. No way, no how. Don't worry. These parachutes are top of the line. Pull the cord and pop. You'll be floating through the air like a feather. At any moment in the open world, simply pilot the Highwind to your destination and take a leap of faith. With the wind rushing past, you'll descend seamlessly from the sky above to the ground below. Where will the winds guide you first? That freedom is in your hands. But no matter your destination, to defeat your enemy, you'll need a fighting chance. And that starts with your trusted allies. At long last, with the world teetering on a blade's edge, everyone assembles at Cloud's side, forming an epic ensemble of heroes, each with their own story that brings you closer together than ever.
But a good unit needs more than friendship to save the day. It needs a disciplined combat regimen. The hybrid battle system, established in Remake and refined in Rebirth, is perfected in Revelation, putting even more power in your hands. In fluid, real-time action, seamlessly switch between party members to even the odds. Then, when the fight calls for strategy, enter tactical mode to unleash a suite of powerful new spells and abilities. Activate devastating synergies with your companions. And of course, call on mighty summoned entities that can turn the tide of battle. You are saying this because you have not played Summoning Ifrit never gets old. There are truly some chill-inducing fights ahead in Revelation. I'm so excited to see all of your reactions. It's gonna be amazing. I'm guessing you have a favorite character to play in battles? Might be a little biased, but since you brought it up, let's have a look at our newest coffin-dwelling companion, Vincent Valentine. I won't return to my coffin until we've put Sephiroth in peace. Vincent is a deft gunslinger, capable of delivering precise, high-yield shots. But there's more to this secretive former Turk than meets the eye. The result of experimentation at the hands of Shinra. Vincent can transform into the Galleon beast at the press of a button, gaining tremendous power while transformed. And when combined with the skills of a certain ace pilot, their high-impact synergies disrupt the fight with ferocious results. The Leaping Lancer, the Dashing Dragoon, the one and only Sid Highwind. Sid Highwind, the cantankerous pilot extraordinaire, joins the party and their mission to defeat Sephiroth. Sid's command of his lance allows him to rapidly close the distance for powerful strikes, or engage in sweeping area of effect attacks to bring a whole host of enemies to heel. But to fully control the battlefield, skill with a weapon only gets you so far. To further augment your combat capabilities, try this on for seconds. Function Integrated Tactical Suitwear, or the FIT system for short, allows you to further customize your playstyle with new uniforms imbued with unique movesets. Alongside your equipment and materia, FITS gives you an extra edge in battle. And to face what's coming, you'll need all the strength you can muster. Sensing its fate hanging in the balance, the planet itself has unleashed its last line of defense. The weapons, ancient beasts that are larger than life and capable of untold destruction. Will you be enough to stop them before it's too late? As the world is torn apart, you and your friends must unite. In Revelation, we come to the thrilling conclusion of the Final Fantasy VII saga, and your mission is clear. Take up your Buster Sword, equip your materia, and stand together. One last time. These skies belong to me! Hope you're ready! I don't like it rough with you, भाई. शिवम भाई जेंटल आदमी है भाई. भाई वो इतने प्यार से फारा लेके ये दरिंदा फारा ऐसे चढ़ा है. Well, thank you all. Thank you, Hamaguchi-san, for bringing us this extended look at Final Fantasy VII Revelation. I think I speak for all of us when I say we cannot wait to finish it. But I think we ended the video too early. I hate to leave a story unfinished. Is that right? Well then, you better take a look. Get the cannon back online! Now!
is here. भाई कितने प्यार से कर रहा हूँ भाई ऐसे नहीं लगता नहीं बिल्कुल मस्त लगता है इत्मीनान से गिरा है रख के गिरा है बिल्कुल एकदम पूरा स्टार्च बना के बिल्कुल शॉक्स बिल्कुल मुंह पे तो झटक के उड़ गया कि हुआ There you have it, Final Fantasy VII Revelation coming to all platforms next spring. It's appropriate for today because SGF is really a celebration of games across all platforms. Thank you to Hamaguchi-san, Kiryu-san, and the team at Square for that very special announcement. And thanks to Lucy for a great job posting. Didn't she be great? Thanks, Jeff. What an amazing way to end the show, but that's not all, because coming up right now is Day of the Devs with a look at many new independent game titles, including multiple new game announcements. That's right, tons of awesome indie games, so make sure to stay tuned and watch that, and we'll see you live this August in Germany for Gamescom Opening Night Live, streaming live on Tuesday, August 25th. Until then, have a great summer, everybody. Thanks for watching. Day of the Devs starts right now. 25th. Until then, have a great summer, everybody. Thanks for watching. Day of the Devs starts right now. क्या मालिश है भाई एकदम भाई तो अच्छा होता है डे ऑफ द डेज crazy number तो नहीं होता है announcements को तो है more of like you getting behind and all the mechanics of what people got inspired by नहीं announcements नहीं होता है showcase गेम खेलेंगे देख ले यार देख ले मैं और बना हुआ है let's go showcase please चलो दे दे मुझे Schaefer from Video Games. I was just trying to come up with a whole new term for world premiere because this edition of Day of the Devs has so many world premieres in it, more than we've ever had before, I think. I think it demands an entirely new term. Day of the Devs, as you know, is a 100% non-profit where it finds and presents the best in new games for you, and also developers who made them. So, while I'm working on this problem, you just sit back and enjoy Day of the Devs. Pro premiere. Lots of pro... No? Okay. There's nothing I dread more than having to make a top 10 list of video games, but if I did, I'd definitely put Nidhogg on that list. So I'm very excited to show you a world premiere of what Messhoff's been working on. Hi, I'm Mark Essen. I'm the creative director and co-founder of Messhoff. You might know us for our 2014 hit Nidhogg, which is a fencing tug-of-war game with flying worms that eat you at the end. Recently, we came out with... अब इस लाइव स्ट्रीम को देखो कितने नए गेम्स के लिए फर्स्ट डेमो लाइव हो सकता है और वो होगा ब्लड मैसेज का होगा ब्लड मैसेज का क्या था मल्टीपल गेम्स में ब्लड मैसेज का लगा दो ना भेंचो हां कल होगा डालो अरे मेरी जान 2-3 के अभी बोले डेमो इज आउट नाउ आपको कैसे बकचोदी करो ना यार अरे क्या हटाओ से फिर मत गिरना
मैसेज का कल से तेरे घर पे आके खेलना पड़ेगा आया किसके चलेगा नहीं आप इस करूंगा संडे सिर्फ संडे की कोई बात नहीं है इट्स फकिंग टुमारो कल का मुश्किल होगा मेरे यहाँ सही कह रहे तुम्हारे यहाँ मुश्किल होगा कल का हाँ कल वो आ रही है ना ठीक है बनाते हैं प्लान तेरे घर का बना इसके घर का यार लाइव हाँ यार अब देखो यार भाई समर गेम फेस्ट हो गया शौर्या के यहाँ वो हो गया मेरे यहाँ Xbox लाइव भी अब कहीं मचाना पड़ेगा भाई क्या आ जाएगा Xbox लाइव यार 7 तारीख हाँ शिवम भाई टाइम टू कंप्लीट द ट्रिलॉजी इज इट पॉसिबल मेरे घर पे लोग रहते ही तो थोड़ा मुश्किल लगेगा नहीं भाई फुल वो बकचोदी चाहिए भाई ना बकचोदी हाँ मेरे घर में जो बकचोदी शांत वाली होती है हैंगआउट करने समझ नाइट से भी आ सकते हो बट वो जो शोर गुल्ला करते हैं ना हाँ नहीं दैट इज सही नहीं और हम दोनों हैं तुम लोग वो करने आ सकते हो नाइट स्टे हम दोनों नहीं भाई आप ही हो ज्यादा बदतमीज मैं तो फिर भी तमीज में रहता हूं बैंक शो भाई ये बंदा क्या आदमी है भाई क्या आदमी है मैं साला नॉइज कैंसिलेशन वाले ईयरफोन ला रहा हूं उसके अंदर आवाज गूंज रही है भाई इस आदमी की भोसड़ी के यहाँ पे छाया बना कर मचा रहा था आवाज नहीं बात सबसे ज्यादा ग्रूमिंग तू करता है बदतमीज भाई छिनालपंती मचाने की तो भाई और मैं बाय द वे बात छिनालपंती की कहां से आ गई बहनचोद हल्ला मचाने की बात हो रही है भाई छिनालपंती की बात कहां से आ गई मेरे बात हो रही है मैं हल्ला मचा उसमें बिकॉज़ इट्स जेन्युइनली भाई इसको क्या स्टॉप स्ट्रीमिंग कर दूं क्या स्टॉप स्ट्रीमिंग रुक जाओ any last words which anyone wants to give away it is now the time चलो मैं करता हूं करो चलो हो गया अब मैं करता हूं क्या होता है बकचोदी मत कर आइए शिवम भाई अब आपने ट्रू लास्ट वर्ड्स दे दिए अबे क्या ASMR दे रहा है भाई नहीं on a serious note आएंगे तेरी ही गली में चाहे देर क्यों ना हो जाए आएंगे तेरी ही गली में चाहे देर क्यों ना हो जाए मारेंगे तेरी ही गांड चाहे जेल क्यों ना हो जाए भाई आई एम वेरी मतलब वो कि फक भाई मेरी फैमिली और उन्होंने देख लिया ना फिर लोड़े लगा दिए शिवम भाई एनी लास्ट वर्ड्स सही तो लग रहा हूं आइए सही तो लगता है आओ भाई आओ शिवम साइड ये दोनों लोड़े डिक्स बिल्कुल ही दिल के बहुत साफ है मोट मार दो फिर मेरी और ये चुतिया पे करते हैं उसका पार्ट नहीं हूँ मैं एंजॉयमेंट का पूरा पार्ट हूँ बट इनकी ये अनएथिकल शिट का पार्ट नहीं हूँ खासकर इसकी ये जो ए ग्रेड गूनर है हमारा ये हमारे गूनर नहीं हुआ ये वो बोल रहे हैं जो हमारे मुठ एवेंजर्स के भोफड़ा मैन है जायंट रिएक्टर से अपने चमका देते हैं अब मैं जायंट रिएक्टर से आई हैव सम स्टैंडर्ड्स टू मेंटेन स्टिल नहीं भाई आई हैव सम स्टैंडर्ड्स टू मेंटेन अच्छा कैप्टन गार्ड मरी का ये बोल दिया मैं हमारी तो चलो बीसी है समझ गया मैं सिविल वॉर के बाद हो गई थी भाई वो सिविल वॉर का कारण मैं बता रहा हूँ अनुपम है वो मुठ सिल्वर नहीं है भाई वो भोसले खोलकर है वो भाई चलो यार अच्छी लाइव स्ट्रीम अच्छी एट द एंड ऑफ द डे अ ट्रू ग्रेट announcements and overall stream अब समर फेस्ट भी हो गया भी अब ट्रिलॉजी कंप्लीट करेंगे Xbox लाइव से तो we'll see you all in Xbox लाइव the next time around चलो यार बाय गॉप बाय